Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video, we will be discussing important current affairs for 9th of October. The session will be quite interesting. In this video, we will be talking about cabinet approvals. We will be talking about Ayushman Bharat digital mission that has completed 3 years journey. Then we will be talking about an announcement for the establishment of 4 thematic hubs and technical groups for NQMs that has been announced by Dr. Jitendra Singh. Then we will be talking about the 40th RPF Raising Day parade that was held at Nasik. Then we will be talking about a partnership that has been signed between MEITY and MCTE, correct, to foster innovation and technological advancement for defense applications. We will be discussing all these things in detail, so stay tuned with us till the end. And students, in this video, a total of 15 important current affairs will be discussed. And students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. And also share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and even with your parents, and let them know about this interesting platform, Affairs Cloud. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. First, we will be discussing some cabinet approvals of 3rd of October 2024. Right, Union Cabinet that is chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the following approvals. First is a modified productivity linked reward, that is PLR. I repeat, modified productivity linked reward scheme has been launched for major ports and dock labor board employees workers from 2021 to 2025 to 2026, right? And here port related and dock related, correct, productivity linked reward will be correct. This reward will be provided to the laborers that are working at these ports, and as per their productivity they will be rewarded. Second is Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana. This is to promote the sustainable agriculture, and the Krishnoti Yojana to achieve food security for self-sufficiency. Take a note of this. Then third is India to join the International Energy Efficiency Hub by signing the letter of intent, that is LOI. Next is conferring the status of the classical languages to Marathi, Pali, Prakrit, Assamese and Bengali languages. Take a note of this. So classical language status has been confirmed for these, that is Marathi, Pali, Prakriti, Assamese and Bengali language. This is important one, so do take a note of this. The next is Chennai Metro Rail Project Phase 2 comprises 3 corridors. Not that important. Next, productivity linked bonus for 78 days to railway employees. Next is National Mission on Edible Oils, that is oilseeds, that is NMEO oilseeds. This NMEO is your National Mission on Edible Oils. This is for 24 to 25 to 2030 to 2031, and here basically the major focus will be to start the manufacturing of these oils in India only, all these edible oils, and also the crops that are required for these edible oils, right, they should also be grown in India only. This will be the major focus here. Next is creation of a post for the presiding officer for the special tribunal at Talcher, Odisha under the Coal Bearing Areas Act of 1957, right? So a special position of a presiding officer will be set up here, correct? So these are some of the approvals, or these are some of the cabinet approvals that has been recently passed by Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi. Moving on, next is Ayushman Bharat Digital Mission has completed transformative 3 years journey towards enabling digital health. We know that all the records are being now asked to maintain digitally,
correct? Even a significant reward is provided to the hospitals, the clinics, so that they can upload the data of those individuals patients on the Ayushman Bharat digital platform, right, on their Abha ID, correct? If any individual is not having an Abha ID and any hospital or a center makes this Abha ID for that person or customer or that patient, then they will be rewarded here. Just to give you an information about this. But coming back here, remember Ayushman Bharat Digital Mission, they have completed 3 years journey. This Ayushman Bharat Digital Mission, remember, this is a flagship scheme of the government of India, right? It was emerged from National Health Policy of 2017 and recently it has completed a successful 3 years. So we can say as it completed 3 years, this Ayushman Bharat Digital Mission, when was this launched? It was launched in 2021 in the month of September, and as the name suggests, digital mission. So the main aim here is to basically revolutionize the digital health space, right, or digital space in India. That includes your digital healthcare ecosystem, digital accessibility, better efficiency of various services, also to maintain the transparency in all the processes, correct? So that is the reason this Ayushman Bharat Digital Mission was launched on 27th of September 2021, hence completed 3 years. So far we will be seeing that more than 67 crore Abha have been created, that is Ayushman Bharat health accounts have been created. These Abha has aimed to provide citizens with unique digital health IDs, that are your Abha ID, correct? It will be an individual for an individual person, and more than 42 crore health records have been linked to this Abha ID that will enable for the seamless access to the medical history of any patient. Take a note of it, right? Then if we talk about National Health Authority, this is the apex body responsible for implementing the government of India's flagship scheme called Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. If we talk about National Health Authority, who is the Chief Executive Officer? LS Changsan, headquartered in New Delhi. Next, if we look at some of the key features here, you will be seeing a unique health identification for citizens, that will be a unique ID. This will be a 14-digit number that will be given to every individual, right? So it will be like, for example, you can consider it as a Aadhaar card for your health records, right? So it will be a 14-digit number, but your Aadhaar card is a 12-digit number, correct? Then apart from this, you will be seeing that health professional registry will be there. You will be seeing health facility registries will be there. Then unified health interface will be there. Data privacy and security will be taken care of it. Then proper transparency will be maintained under this. Apart from this, if we talk about some of the key initiatives that comes under Ayushman Bharat Digital Mission, so it will be having a facility of scan and share, that will be a QR code based facility. Then digital health incentive scheme has been provided, right? That is basically for promoting and promoting the adoption of the ecosystem of Ayushman Bharat Digital Initiative. Then apart from this, there is a key milestone that needs to be taken care of, that is more than 67 crore Abha have been created and over 42 crore health records have been linked to Abha. More than 236 private entities, that includes your labs, pharmacies, digital solution companies, have been integrated with Ayushman Bharat Digital Mission ecosystem that plays an important role. Moving on, next is Union Minister Dr. Jitendra Singh has announced the establishment of 4 thematic hubs and technical groups for NQM. What is this NQM? This is your National Quantum Mission. This is your NQM, right? So as you can see in the picture here, Dr. Jitendra Singh has announced the establishment of 4 thematic hubs and technical groups for National Quantum Mission, right? This was launched via video conferencing at New Delhi, and these 4 T hubs, that is your thematic hubs, that will comprise of 14 technical groups across 7 states and union territories. These hubs, they will be bringing together a total of 152 researchers from 43 institutions, which will further include 31 institutes of national importance, 8 research laboratories, 1 university, 3 private institutes across India. Also, Ministry of State Science and Technology, they have also launched Bharat Gen. This is an initiative in generative AI technology that is designed to revolutionize the public service delivery and boost the citizen engagement. So this Bharat Gen, this will be a generative AI model based
service that is basically that will revolutionize the public service delivery and help the citizens engagement or increase the citizen engagement. Correct? So this is your 4 thematic hubs and technical groups launched for National Quantum Mission. Okay, for quantum, no, let me give you an idea. Quantum is basically very small, right? And when we are talking about something like, for example, quantum computers, there are terms qubits, right? Qubits are similar to that of a 0 and 1 that we use in our coding, like 0 and 1, 0 0 1 1 0 1 0 1 and so on, right? Similarly, in quantum technology we use something called qubits, correct, that helps to make these supercomputers or these quantum computers better than that of supercomputers, correct. Then if we talk about these T hubs, that are your thematic hubs, right, they are based on a multidisciplinary approach. That means this will be bringing together experts from various fields such as your physics, computer science, engineering, material science, your IT, networking, right, then your mechanical and so on. So experts from various fields will be bringing together and they will help us in their academy. Also, these hubs, they will bring together a total of, as we mentioned, 152 researchers from 42 institutions, correct. Take a note of this. Also, this thematic hub for quantum computing will be based at IISc Bangalore, Karnataka. Right, I repeat, a thematic hub for quantum computing will be established at IISc Bengaluru, that is in Karnataka. Next, moving on. If we talk about this National Quantum Mission, remember, Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved this National Quantum Mission with the budget outlay of 6,003 crore rupees for a period of 8 years. This was from FY24 to FY31, and this National Quantum Mission is led by the Department of Science and Technology. Also, the key target of this National Quantum Mission is to develop the intermediate scale quantum computers with 50 to 1000 physical qubits that we were discussing about, right, and they will be developed in 8 years in various platforms such as superconducting and photonic technology that will be included here. So just don't go deep in that. Just remember this National Quantum Mission, it was launched by Prime Minister Narendra Modi with an outlay of 6,003 crore rupees for a period of 8 years, and it was from FY24 till FY31. Moving on. Then if we talk about Bharat Gen, we saw this Bharat Gen was led by IIT Bombay. This comes under National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems. This will be implemented by the Technology Innovation Hub, Foundation for Internet of Things and Internet for Everything at IIT Bombay, correct. And this Bharat Gen technology, what will be the main aim of this Bharat Gen technology that we just saw? Basically, this Bharat Gen technology will be based on generative AI, right, and this will be using, or this generative AI will be used to enhance the delivery of the public services, correct. So that will be the use of generative AI in this Bharat Gen. Moving on. Then one more thing here, you can see that as this will be having delivery of various services, so this will be multilingual and multimodal. This will be on open source and it will address both text and speech, ensuring representation across various diverse linguistic landscape of our India. Next is Union Minister Ashwini Vaishnav has attended the 40th RPF Raising Day Parade at Nasik. RPF is your Railway Protection Force. So recently Ashwini Vaishnav, right, and he is a Union Minister of Ministry of Railways. He attended the 40th edition of the Raising Day Parade of Railway Protection Force at the Zonal Training Center, that is in Nasik. Nasik is where it is in Maharashtra. And as the chief guest, he honored more than 33 RPF personals with police medal for their meritorious service, and also Jeevan Raksha medal for their courageous efforts in saving the passengers during 2023 and 2024. So 2 medals, that is your police medal as well as Jeevan Raksha medal, was awarded to 33 RPF personals. Apart from this, remember, the minister here has announced 35 crore rupees grant for upgrading and modernizing the RPF zonal training centers, focusing on various facilities for women, and an additional of 5.5 crore rupees was allocated for enhancing training infrastructure at the RPF Dog Squad
RPF Dog Squad Zonal Training Center that will be in Tamil Nadu. Apart from this, a launch of a Hindi edition of the Sangyan mobile application was also made to improve the communication with the force. Correct? This RPF Raising Day, one more thing that is important, that when do we observe this RPF Raising Day? It is observed on 20th of September, and this year it was the 40th edition of this RPF Raising Day that was observed. Moving on, next is MEITY, that is Ministry of Electronics and Information Technology, and MCTE, that is Military College of Telecommunication Engineering. They have recently partnered to foster innovation and technological advancements for defense applications. Right, that means these two organizations, they will be partnering, they will be doing research and development in various use cases of various technologies that will be helping in the advancement of our defense sector. Right, this partnership will strengthen the collaborative efforts for the joint research and development in sectors such as artificial intelligence, quantum technology, chip design, 5G technology, 6G technologies, electronics devices that can be used in future. Next is international affairs. Here you will be seeing Nirmala Sitharaman ma'am in the picture, right? She's our finance minister, and she was on a visit to Uzbekistan recently, and this was the basically to attend the 9th annual meeting of the Board of Governors of AIIB. I repeat, this was, or Nirmala Sitharaman ma'am was on a visit to Uzbekistan to attend the 9th annual meeting of Board of Governors of Asian Infrastructure Investment Bank in Samarkand, Uzbekistan. She led the Indian delegation of officials from the Ministry of Finance, and she has also held important bilateral meetings with the counterparts from Uzbekistan, Qatar, China, AIIB President Jin Lincoln also. Correct? Take a note of this. Next is a signing of a BIT between India and Uzbekistan, right? As you know that she was on a visit to Uzbekistan. During this BIT, that is a bilateral investment treaty, has been signed between our India and Uzbekistan, right? This was signed by Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman and Uzbekistan's Deputy Prime Minister, as you can see here, in Tashkent. Here, the aim here is to enhance the investor confidence by guaranteeing a minimum standard of treatment and non-discrimination, along with establishing independent arbitration forum for dispute resolution. That means both our countries, India and Uzbekistan, right? If there is any dispute between any trade or any businessman that is going on, that will be resolved easily. And the main focus here will be so that these two countries can have confidence in each other, they can trust each other, and the trade can flourish between these two countries. That is the reason this bilateral investment treaty BIT was signed between India and Uzbekistan. Next is banking and finance. Asian Development Bank has approved $162 million loan for sustainable tourism development in Himachal Pradesh. I repeat, banking and finance we are talking about, and here it is Asian Development Bank, right? They have approved $162 million loan to support the sustainable and inclusive tourism development projects that will be in Himachal Pradesh. This project aims to improve the district level tourism management and to develop destination plans and tourist sites in Himachal Pradesh. We know that the economy of Himachal Pradesh is very much dependent on tourism, right? So in order to encourage that, in order to make sure that the tourism sector can flourish in Himachal Pradesh, various tourism related activities will be coming into place. We will be saying that various destinations will be redeveloped. We will be saying that the castle, there will be various castles will be restored. We will be seeing that the cultural sites, cultural centers, public spaces, right, they will be redecorated, they will be restructured there, right? And places such as in Himachal Pradesh, Mandi, Hamirpur, Kullu, Kangada, they will be renovated, right? So that more and more tourists can be attracted, they can come there, and tourists wants to visit that place that is in good, that provides a soothing feeling to the travelers, right? Because they want to feel relaxed and enjoy the nature. Coming back, if we talk about Himachal Pradesh, who is the Chief Minister of Himachal Pradesh? Sukhwinder Singh Sukhu. Who is the Governor? Shiv Pratap Shukla. Next is CBDT has released the new guidelines for handling the delayed tax refund claims.
CBDT, that is Central Board of Direct Taxes. This comes under the Department of Revenue of the Ministry of Finance, and they have released the new guidelines for handling the delays in submitting the income tax return that includes the claims for refunds on carrying forward losses under section 119 2B of the Income Tax Act of 1961. What are basically claims for refund on carrying forward losses? Forward losses is basically say for in this financial year you were trading and you took a heavy loss, right? And you declared that loss in this year, but you want to carry out for the next year also, right? You want that, say for example, next year you made, or this year you made a loss of 10 lakh rupees, and next year you made a profit of 10 lakh rupees, but next year you have to pay a tax of almost 12.5% on that trade, right? On the long term capital gain or short term capital gain, 20% you have to pay that. But what can be done is, like, as you have made a loss of 10 lakh rupees in the previous quarter or previous financial year, you can carry forward that loss, right? You can carry that 10 lakh rupees lost of last year and offset it with the profit of 10 lakh rupees of this year. So this can be done, correct? So here CBDT has introduced 3-tier system for processing the applications based on the claim amounts, and as per the new guidelines, the time limit for filing such application within 5 years from the end of assessment year will be applicable for the application from after 1st of October, correct? Take a note of this. If we talk about CBDT, who is the chairperson of CBDT? Ravi Agarwal. Where is the headquarter? New Delhi, established in 1963. Next is SEBI has introduced new regulations for InvITs and REITs to boost liquidity and ease business compliances. I repeat, SEBI, right? That is Securities and Exchange Board of India. They have introduced the certain amendments in the SEBI Regulation 2024 in the SEBI regulations of in the SEBI regulation for InvITs, that is your infrastructure investment instruments, and REITs, that is your real estate infrastructure investments, right? In InvITs you are basically investing in the infrastructure of a country, and REITs you are investing in the real estate. These REITs can be of two types, where you will be investing in the residential, and second where you will be investing in the commercial spaces, correct? So two new regulation has come into place for InvITs and REITs to boost liquidity and ease the business compliance. The main thing that you need to remember is that the most significant change introduced by SEBI for the InvITs is that it has reduced the trading lot size of privately placed infrastructure investment trust to 25 lakh rupees. This move aims to boost investor participation and increase liquidity of such investment vehicles. And as per the new regulation, SEBI has also fixed the timeline for undertaking distributions to unit holders by REITs and InvITs to 5 working days from the record date, right? That means within 5 working days, right, your units that you have bought will be allocated to you, correct? Moving on. Next is, if we talk about the key changes here, you have seen that SEBI mandated that for publicly placed InvITs, that distribution declarations must be made at least semi-annually, that is once every 6 months in every financial year, and annually for privately placed InvITs. And as per the new regulation, SEBI has also fixed the timeline for undertaking the distribution units. As I mentioned, within 5 working days, your REITs and InvITs that you, or the units that you purchased, will be shown into you or will be provided to you. Next is Satya Micro Capital. They have secured $1,000 million rupees from Mizuho Bank for empowering the women entrepreneurs. I repeat, here you can see Satya Micro Capital, correct? That is a New Delhi based NBFC, and here they have successfully raised not 1000, take a note, correct it, 100 crore rupees, or I repeat, this is $1,000 million, that is equal to 100 crore rupees. They have been raised from Tokyo, Japan based Mizuho Bank, right? This is a subsidiary of Mizuho Financial Group. So Satya, they have been backed by Mizuho Bank for first time, expanding their lender base, correct? So this, remember, 1000 million rupees is equal to 100 crore rupees only, right? So Satya Micro Capital, they have secured 100 crore rupees from Mizuho Bank, empowering the women entrepreneurs. Next is awards and recognition. American biologist Victor Ambrose and Gary Ruvkun has won the Nobel Prize in Physiology or Medicine for 2024. I repeat, as you can see on the left, Victor Ambrose, an American development biologist, and Gary Bruce Ruvkun on the right, he's an American molecular biologist. They were jointly awarded with the Nobel Prize in
Physiology and Medicine 2024. Right here you can see Victor Ambrose and Gary Bruce Rovcom, and they were awarded for Physiology and Medicine Nobel Prize in 2024. They were honored for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. Correct? Take a note of this. Next is Science and Technology. DRDO has successfully flight tested the 4th generation very short range air defense system. Right, and DRDO successfully tested this 4th generation very short range air defense system where in Pokhran field firing range, that is in Rajasthan. This test was done from a ground based portable launcher, as you can see it in the picture. Correct? Take a note of this. Apart from this, remember, this will be a heat seeking. That means this very short range air defense system, basically it will be able to easily track the or the object or its target using heat. So it will be heat sensing or heat seeking missile. Correct? And it has a strike range of up to 6 kilometers. Then if we talk about DRDO, who successfully flight tested this 4th generation missile in air defense system in Rajasthan. For DRDO, who is the chairman, Dr. Samir V. Kamath, headquartered in New Delhi, established in 1958. Next is DRDO and IIT Delhi. They have developed ABHED lightweight bulletproof jackets. So DRDO, in partnership with the researchers from IIT Delhi, they have developed advanced ballistics for high energy defeat, that is ABHED. This is a lightweight bulletproof jacket. What are bulletproof jacket? That means when you are firing at these bulletproof jackets, right? Or we can say when a person is wearing these light bulletproof jackets, so whenever a bullet is fired on them and if it hits that jacket, the impact won't be that severe. The bullet would not be able to penetrate into that jacket and into the body, so no damage will be there, but still the person will be feeling a little bit of pain because of the such high momentum of that bullet. Correct? So it is DRDO and IIT Delhi. They have developed this advanced ballistic for high energy defeat lightweight bulletproof jacket. Next is Iran. They have unveiled a powerful suicide drone by the name Shahed 136B. Right? So Shahed 136B, this is a suicide drone. It was unveiled by whom? It was unveiled by Iran. Correct? Apart from this, remember this one-way attack drones, also known as by the name kamikaze drone or suicide drones. Correct? And Jihad. Remember, Jihad is a single stage liquid fuel ballistic missile, was also showcased here. So two things, suicide drone, that is Shahed 136B, and Jihad, that is a liquid fuel ballistic missile. And we know right now that Iran, they are in currently war with Israel. Next is important days. International Translation Day, observed on 30th of September. It is to honor the efforts of language professionals who work in crucial in uniting nation, fostering communication, aiding development, enhancing global peace and security. And there is a theme here, translation and art worth protecting, moral and martial rights for indigenous languages. The International Translation Day was first observed in 1991. Take a note of this, right? Next students, let's move to the one-liners. We saw the cabinet approvals. Then Ayushman Bharat Digital Mission completed a transformative 3-year journey towards enabling digital health. Then Union Minister Dr. Jitendra Singh has announced the establishment of 4 thematic hubs and technical groups for National Quantum Mission. Then Union Minister Ashwini Vaishnav has attended the 40th Railway Protection Force Raising Day Parade at Nasik, Maharashtra. Then MEITY and MCTE, they have partnered to foster innovation and technological advancement for defense applications. Then if we talk about Finance Minister Nirmala Sitharaman, she was on a visit to Uzbekistan. Then Asian Development Bank, they have approved $162 million loan for sustainable tourism development in Himachal Pradesh, and various places in Himachal Pradesh will be redecorated, restored. Then CBDT, they have released the new guidelines for handling the delayed tax refund claims. Then SEBI, they have introduced new regulations for InvITs and REITs to boost liquidity and ease of business compliance. Then Satya Micro Capital, they have secured 100 crore rupees from Mizuho Bank for empowering women entrepreneurs. Then American biologist Victor Ambrose and Gary Rovcom, they have won the Nobel Prize in Physiology and Medicine 2024. Next is DRDO, they have successfully tested the 4th generation of very short range air defense system in Rajasthan.
Then DRDO and IIT Delhi, they have developed this ABHED. This will be a lightweight bulletproof jacket. Then Iran, they have unveiled the powerful suicide drone by the name Shahid 136B. Then next is International Translation Day. It is observed on 30th of September. So that's all for the day, students. I hope the session was interesting and you have learned multiple things. So students, now let's move to some revision part. Which organization has recently organized the 2-day first International Solar Festival, which was virtually addressed by Prime Minister Narendra Modi. So it was launched by International Solar Alliance. Right option is option 2. It is a joint venture between India and France that was established in 2015. Where is the headquarter? Gurugram, Haryana. Who is the project director here or managing director for this International Solar Alliance? Ajay Mathur. Next, which country has recently authorized to become the new member of BRICS New Development Bank? Which is that country? It is Algeria. Correct. And apart from this, remember, this was during a meeting of the BRICS countries. That was the 9th annual meeting of the National Development Bank that was held in South Africa. And this meeting was based on theme that is investing in a sustainable future. Next, who among the following is not featured on the Time 100 most influential people in artificial intelligence 2024 list? So Akshit Bansal. He is the individual who is not listed here. So Sundar Pichai, Anil Kapoor, Ashwini Vaishnav and Satya Nadella. These are the 4 individuals who are listed on this list. Next, who was the first Indian to be elected as the president of Olympic Council of Asia in September 2024? So Raja Randhir Singh. Right, he became the first Indian to be elected as the president of OC, Olympic Council of Asia. Take a note of this. Then he was the first shooter also, and he's related to which sport? He's related to shooting. He was awarded with Arjuna Award in 1979. Correct. Apart from this, he also received the Olympic Order in 2014, the Silver Olympic Order. Next, which ministry has recently set to sell 6.78% stake in General Insurance Corporation of India through offer for sale to raise 4,700 crore rupees? Which is that ministry? It is Ministry of Finance. So they will be selling 6.78% stake here for 4,700 crore rupees. Out of this, 3.39% share will be divested through equity and rest 3.39 through green shoe option. Next, when is the UN International Day of Clean Air for Blue Skies observed across the world to raise awareness about the importance of clean air for sustainable future? It is 7th September. Right? This is observed as UN International Day of Clean Air for Blue Skies. And this was the 5th edition of this day that was observed. Then there is a theme for this, that is invest in #clean air now. Next, Ministry of Information and Broadcasting has recently organized Khel Utsav 2024 to commemorate whose birth anniversary? So it is of Dhyan Chand. Correct. So Khel Utsav 2024 was recently organized by Ministry of Information and Broadcasting to commemorate the birth anniversary of Major Dhyan Chand. Correct. Also remember, this grand supporting event was organized that coincides with National Sports Day. Correct. And here the focus will be on competition that are 4 popular sports in India: cricket, hockey, badminton and table tennis. Next, which country has recently bowled out Mongolia for a mere 10 runs and chased down the target of ICC T20 World Cup 2026 qualifier? It is Singapore. Next, which of the following has recently become the first major Indian bank to join the partnership for carbon accounting financials? So which of the following has recently become the first major Indian bank to join PCAF, that is Partnership for Carbon Accounting Financials? It is Union Bank of India. This is an important question and do remember this. This PCAF, this is an organization basically that looks into the financials of the company, correct? And it looks up among the greenhouse gas emission reports of those organizations in which the multiple investors will be investing. Right? And further, if the report is good,
That means they are creating less pollution, and hence the companies and the investors can invest more and provide more loans to that particular organizations. Next, who has been recently appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of IFPO Tokyo General Insurance Company Limited. So, Subrata Mondal has been appointed as MD and CEO here. He will be replacing whom? H.O. Suri. Next, who has been recently appointed as the Finance Secretary of the Ministry of Finance? So, Tuhin Kanta Pandey. Tuhin Kanta Pandey has been appointed as the Finance Secretary of the Ministry of Finance. He will be succeeding whom? TV Somnathan. Correct. Apart from this, if we talk about Atul Kumar Chaudhary here, remember he became the new Secretary of TRAI, that is Telecom Regulatory Authority of India. Next, in September, India successfully launched Agni 4 missile from the integrated test range in Chandipur, Odisha. And Agni 4 belongs to which type of missile? So this Agni 4, remember, this is a intermediate range ballistic missile, IRBM, intermediate range ballistic missile. It was Agni 4, right? It was tested where? In ITR Chandipur, that is in Odisha, and this is the fourth missile of the Agni series. It is developed and designed by which organization? It is designed and developed by DRDO. It is a surface to surface missile, right? And it has a range of almost 4,000 kilometers, and it is also capable of carrying nuclear warheads. Next, which shipbuilding company has recently launched two indigenous designed and constructed anti-submarine warfare shallow watercraft that are named Indian Naval Ship Malpe and Indian Naval Ship Mulki? So they have been designed and developed by Cochin Shipyard Limited. They are anti-submarine warfare shallow watercraft ships, and they are INS Malpe and INS Mulki. These are the two one, and they have been developed by Cochin Shipyard Limited. If we talk about the fourth one, it is Indian INS Malpe, and the fifth one is INS Mulki. Next, students, is your homework section. You have to give me 3 current affairs related to defense, right? You can name any missile. You can name me about various drones or about any contract of manufacturing that India have gained in the last few months. So that's all for the day, students. Do hit the like button if you find the session interesting. Also, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 9 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को भी 3 साल पूरे हो गए हैं। देन हम बात करेंगे 4 थीमेटिक हब सेटअप करने की बात की गई फॉर नेशनल क्वांटम मिशन। इसी के साथ हम बात करेंगे 40वें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेजिंग डे के बारे में, जिसकी एक परेड हुई नासिक में। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे MEITY एंड MCT के बीच में कभी पार्टनरशिप हुई है। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम टोटल 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। जो कंटेंट हम आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एंड सुबह 5 बजे हमारी डेली वीडियो आपकी करंट अफेयर्स की डल जाती है। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in.
Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. देन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कैबिनेट अप्रूवल्स की। सबसे पहले देखो कैबिनेट अप्रूवल्स, तो ये यूनियन कैबिनेट जो है चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसी में याद रखेंगे सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो है मॉडिफाइड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड स्कीम। ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्कीम है कि जो पोर्ट्स एंड डॉक लेबर्स हैं, राइट, उनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उनको यहाँ पे रिवॉर्ड प्रोवाइड कराया जाए। ये स्कीम लॉन्च की गई थी। FY21 से लेके FY26 तक ये स्कीम एप्लीकेबल रहेगी। देन हम बात करें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की। ये आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात करता है। एंड कृष्णौती योजना, ये आपका जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर बात करता है। देन हम बात करेंगे इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब को बाय साइनिंग एन LOI। इसी के साथ साथ द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस को यहाँ पे कन्फर्म किया गया, जैसे मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली लैंग्वेज, ये अब क्लासिक लैंग्वेज के अंडर आ जाती है। इसी के साथ साथ बात करें चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फेज़ 2, यहाँ पे 3 कॉरिडोर्स रहेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है ये बिल्कुल भी। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस फॉर 78 डेज टू रेलवे एम्प्लॉयज़, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। देन इसी के साथ साथ एडिबल नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि इंडिया एडिबल ऑयल्स की प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाना चाहती है ताकि हमारी जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म की जा सके एंड हम प्रोडक्ट को अपने देश में बनाएं, कंज्यूम भी करें एंड उसको अगर बचे तो एक्सपोर्ट भी कर सके। हम इतने सक्षम होना चाहते हैं। तो यहीं पर जो एडिबल ऑयल्स के लिए जो प्लांट्स की ज़रूरत होगी वो भी हम इंडिया में ही, पाम ऑयल्स कि जैसे पाम ऑयल्स हो गए, राइट, तो उसके लिए पाम्स उगाने पड़ते हैं, तो उसकी भी खेती बाड़ी इंडिया खुद करने की यहाँ पे जोरों शोरों में लगा हुआ है। तो ये थे कुछ आपके कैबिनेट अप्रूवल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। जैसा नाम सजेस्ट करता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यहाँ पे डिजिटाइजेशन के ऊपर बात की गई है। यहाँ पे बात की गई है कि जो आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आभा ID आ गया था, राइट, आभा ID क्या थी, आपकी एक ID बनाई जाएगी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स की, जिसमें आपके जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे आपकी इस आभा ID में स्टोर हो जाएंगे। 14 डिजिट की ID रहेगी, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, हर इंडिविजुअल के लिए अलग आधार कार्ड होता है। सिमिलरली आभा ID भी हर इंडिविजुअल के लिए एक अलग ID होगी, जिसके बेसिस पे उनको जो हेल्थ है, उनका प्रीवियस हेल्थ है, राइट, जो भी हिस्ट्री है हेल्थ की, वो वहाँ पे उसमें स्टोर की जाएगी, ताकि फर्दर जब भी उनको कभी भी ज़रूरत पड़े या किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो वो उस रिकॉर्ड्स को निकलवा कर वो डॉक्टर के सामने प्रेजेंट कर सके इजीली। इवन यहाँ पे लोगों को आभा ID पे शिफ्ट करने के लिए उनके रिकॉर्ड्स को कई जो हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, उनको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 3 साल पूरे हो गए हैं टुवर्ड्स एनेबलिंग डिजिटल हेल्थ। मार्क करके चलेंगे इसको। सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया था। ये आपकी स्कीम है जो कि आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंडर आती है। सो फार अगर हम देखें 67 करोड़ आभा आगरा अकाउंट्स यहाँ पे खोले जा चुके हैं, जहाँ पे हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, करेक्ट। इसी के अलावा हम देखेंगे, अगर मैं बात करूँ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, LS चंगसान, हेडक्वार्टर रहेगा इसका न्यू दिल्ली में। इसी के अलावा आप देखेंगे, अगर कुछ फीचर्स की बात करूँ तो जैसे हमने ID तो देख ली कि आभा ID होती है। इसी के अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रीज होती हैं, प्रोफेशनल रजिस्ट्रीज होती हैं। इसी के अलावा हम देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट, वो यहाँ पे हेल्थ की इस पे एक्सचेंज की जा सकती है ID की मदद से। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस सेटअप किया जाएगा ताकि बेटर सर्विसेज उन तक पहुँचा सके। बेटर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा एंड ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाएगा। चलिए, इसी के अलावा हम देखेंगे जो माइलस्टोन अचीव किया है कि 67 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे आभा अकाउंट्स हमने देखे हैं। ऑल्सो 42 करोड़ से भी ज़्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिंक किए जा चुके हैं आभा ID से। 236 प्राइवेट एंटिटीज़ यहाँ पे इंक्लूडिंग लैब्स, फार्मेसीज, डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज इसके अंडर आती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 थीमेटिक हब्स एंड टेक्निकल ग्रुप्स फॉर नेशनल कंप्यूटिंग मिशन। देखो, ये जो नेशनल कंप्यूटिंग मिशन है ना, इसके अंदर ये टर्म समझो क्वांटम। क्वांटम क्या होता है, बहुत छोटे स्केल पर, बहुत ही छोटे स्केल पर हम क्वांटम को बोलते हैं कि जब हम चीज़ों को नैरो डाउन कर दे टू द स्मॉलेस्ट साइज, करेक्ट। तो क्वांटम वर्ल्ड में ना 2 चीज़ होती हैं। जैसे हम इंडिया वर्ल्ड में देखते हैं, कंप्यूटर्स जो होते हैं आपके वो 0 और 1 पे वर्क करते हैं, राइट। ये आपकी लैंग्वेज हो जाती है, बाइनरी डिजिट हो जाते हैं 0 और 1। लेकिन क्वांटम में 0-1 की जगह होते हैं क्यूबिट्स, ये याद रखेंगे, करेक्ट। इन क्यूबिट की मदद से आपकी
ट्रांजैक्शंस होती हैं और जो स्पीड्स होती है ना, जैसे जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं उनमें बहुत हाई स्पीड हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्यूबिट्स एक साथ यहाँ पे आपकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं एंड एक साथ यहाँ पर आपके प्रोबेबिलिटी के गेम पे खेला जाता है एंड उससे हम देखते हैं जो प्रोसेसिंग स्पीड आती है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है क्वांटम कंप्यूटर्स में। करेक्ट। तो यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया 4 थीमेटिक हब सेटअप किए जाएंगे एंड टेक्निकल ग्रुप सेटअप किए जाएंगे अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। राइट। अब इसी में अगर हम देखें तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी, यहाँ पर हम देखेंगे नए नए यूज केसेस लाए जाएंगे, यहीं पर हम देखेंगे 14 टेक्निकल ग्रुप्स, 14 टेक्निकल ग्रुप्स, 17 प्रोजेक्ट टीम्स, 17 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज के अंडर यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे ये 4 टेक्नोलॉजिकल हब्स। करेक्ट। यहीं पे इनको थीमेटिक हब्स, जिनको टी हब्स भी बोला गया। इसी के अंदर हम देखेंगे एक भारत जैन भी। राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखें नेशनल क्वांटम मिशन 8 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया था, 6003 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया था। FY24 से लेके FY31 तक इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया नेशनल क्वांटम मिशन को। जो की टारगेट रहेगा इस नेशनल क्वांटम मिशन का इज टू डेवलप इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स 50 से लेके 1000 फिजिकल क्यूबिट से, जिसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर भारत जैन की बात करें, ये भारत जैन क्या है, बेसिकली जनरेटिव एआई को यहाँ पे इन मॉडल्स को ट्रेन किया जाएगा एंड इन मॉडल की मदद से जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको और बेटर किया जाएगा, उसको और सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सिटीजन यहाँ पे इंटरेक्ट कर सके इस भारत जैन के अंडर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस भारत जैन को एक और चीज़ याद रखेंगे, मल्टीलिंगुअल बनाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पूरे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो उन सभी को कैटर करने के लिए इसको मल्टीलिंगुअल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने अटेंड किया 40th एडिशन ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेजिंग डे परेड, जो कि नासिक महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली। राइट। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की 40th परेड थी, 40th रेजिंग डे था ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। राइट। याद रखेंगे इसकी अगर हम बात करें 40th रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑब्जर्व किया जाता है आपका 20 सितंबर को, और इस साल 2024 में हमने इसका 40th एडिशन ऑब्जर्व करा है। यहीं पे याद रखेंगे एंड यहीं पे याद रखेंगे 35 करोड़ ग्रांट यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा, ताकि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं फॉर वीमेंस के लिए, उनको मॉडर्नाइज किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं MEITY एंड MCTE, इन्होंने पार्टनर किया ताकि इनोवेशन के ऊपर बात की जा सके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ सके डिफेंस एप्लीकेशन में। देखो हम जानते हैं इंडिया हेविली बेट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग पे और इन हाउस कैपेसिटीज़ बनाने के लिए, ताकि हम जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो हम अपने इंडिया में ही डेवलप कर सकें। राइट। तो MEITY एंड MCTE इन्होंने पार्टनर किया टू फॉस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर डिफेंस एप्लीकेशन। करेक्ट। तो आप देख सकते हैं MEITY एंड इंदौर मध्य प्रदेश बेस्ड MCTE इन्होंने पार्टनर किया इनोवेशन एंड ड्राइव करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर डिफेंस एप्लीकेशन। यहीं पे हम बात करेंगे AI के ऊपर, क्वांटम के ऊपर, क्वांटम टेक्नोलॉजीज के ऊपर, 5G के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के ऊपर एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम ने विजिट किया उज्बेकिस्तान में एंड ये यहाँ पर इन्होंने अटेंड की 9th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, समरकंद उज्बेकिस्तान में ये हुई थी। करेक्ट। यहीं पर हम देखेंगे कि इनके द्वारा बिल्डिंग रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल के ऊपर बात की गई, एज वेल एज यहाँ पे याद रखेंगे एक BIT एग्रीमेंट साइन किया गया है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इसके अंडर इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है उसके ऊपर बात की जाएगी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे की कंट्रीज के बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ बेटर से बिहेव करें, कोई भी एग्जिस्टिंग अगर प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें, कोई भी डिस्प्यूट है उसको इसके अंडर यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, ताकि बेटर रिलेशन हो सके इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एंड ट्रेड फ्लरिश कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी अप्रूव किया $162 मिलियन का लोन फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है ना वो टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। राइट। बाहर से टूरिज्म आएंगे तो इनके यहाँ पे खर्चा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। करेक्ट। तो उस टूरिज्म की जो एक लुक एंड फील है ना, उस वाइब को इम्प्रूव करने के लिए, कि जगहों को रिस्टोर करने के लिए, जो सोशल प्लेसेस हैं, राइट, सोशल कल्चरल प्लेसेस हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए
लिए, जो पब्लिक प्लेसेस आ जाती हैं, राइट, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जहाँ पे ट्रैवलर्स ज़्यादा आते हैं, उनको और ब्यूटीफाई करने के लिए कि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलर्स यहाँ पर आए। इसके अंडर हम देखेंगे मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, हमीरपुर, कंगड़ा, राइट, इन सबको यहाँ पर हम देखेंगे, इनको रिस्टोर किया जाएगा और इनको और ज़्यादा बेटर बनाया जाएगा, करेक्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट को हम ला सकें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन रहेंगे? शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट आ जाते हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इन्होंने रिलीज की नई गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग डिलेड टैक्स रिफंड क्लेम्स, राइट, एंड यह जाता है आपका फॉर कैरिंग फॉरवर्ड लॉसेस। देखो कैरिंग फॉरवर्ड लॉसेस क्या होता है, टर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस साल ट्रेड करा और 10 लाख रुपए का लॉस ले लिया, राइट, एंड आपने इसको कैरी फॉरवर्ड करा दिया। नेक्स्ट ईयर जब आप मान लो 10 लाख रुपए का फिर आपने प्रॉफिट किया, तो आपको 10 लाख के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा 20% का। लेकिन आप क्या करेंगे, आपने तो कैरी फॉरवर्ड करा लिया था लॉस, तो आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं, राइट, आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं एंड आपको फिर फर्दर कोई आगे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये हो जाता है आपका कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि जो सीबीडीटी इंट्रोड्यूस अ 3 टायर सिस्टम, ताकि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्लेम अमाउंट्स है उनको प्रोसेस किया जा सके। एंड नई गाइडलाइंस के अंदर जो टाइम लिमिट है फाइलिंग सच एन एप्लीकेशन विद इन 5 ईयर्स होनी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। फिर इसी के अलावा यहीं पे याद रखेंगे एक और चीज़ कि जो सेबी के द्वारा ना कुछ नई रेगुलेशंस आई हैं इनविट्स के लिए एंड रीट्स के लिए। अब देखो इनविट्स क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनविट्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। वहीं पे अगर मैं रीट्स की बात करूं तो रीट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यहाँ पर आप देखेंगे 2 तरह का होता है। एक तो हो जाता है रेजिडेंशियल रीट्स, एक हो जाते हैं कमर्शियल रीट्स। तो बेसिकली रियल एस्टेट में आपका इन्वेस्टमेंट होता है रीट्स में, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट होता है इनविट्स में, करेक्ट। तो यहीं पर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो अगर इनविट्स की बात करें फॉर एग्जांपल, राइट, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज आया है वो सेबी के द्वारा लाया गया इन इनविट्स कि जो ट्रेडिंग का लॉट साइज है ना उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें एंड जो कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। टू 25 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें सेबी के द्वारा एक और चीज़ लाई गई नई रेगुलेशन के हिसाब से, जो भी यूनिट्स यहाँ पे बाई की गई, राइट, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने रीट बाई किया, तो वो आपके 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर यहाँ पे फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट आपको होल्ड कर दिए जाएंगे, राइट, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहीं पे आप देखेंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं सत्या माइक्रो कैपिटल। इन्होंने सिक्योर किया 1000 मिलियन रुपीज़ या मैं बोलूँ 100 करोड़ रुपीज़ का लोन। कहाँ से? मिज़ू बैंक ये आपका टोक्यो जापान बेस्ड बैंक रहेगा। एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को फंड प्रोवाइड कराने के लिए, इनको फाइनेंस करने के लिए, इनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए अपने वेंचर के लिए ये अमाउंट सत्या माइक्रो कैपिटल के द्वारा सिक्योर किया गया। 100 करोड़ रुपीस सिक्योर करे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के ऊपर, तो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं, 2 बायोलॉजिस्ट आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोमकुन। इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024, ठीक है। मार्क करके चलेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं इनका फॉर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024। विक्टर एम्ब्रोस ये अमेरिकन डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट हैं एंड गैरी ब्रूस रोमकुन ये एक अमेरिकन मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो अभी डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया 4th जनरेशन ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये वो ग्राउंड से इसको टेस्ट किया गया वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को। कहाँ सर? पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज से इसको टेस्ट किया गया। कहाँ पर है पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज? ये आपकी राजस्थान में रहेगी, राइट, एंड यहाँ से इसकी कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट करने के लिए इसको टेस्ट किया गया है। ये 6 किलोमीटर तक का टारगेट हिट कर सकती हैं एंड हीट सीकिंग रहेंगी, मतलब हीट को टारगेट बना के उसको ये पीछा करती रहेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं डीआरडीओ एंड आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया एक बुलेट प्रूफ जैकेट, काफ़ी लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट रहेगी ये। एंड एबीएचईडी क्या है? एडवांस ब्लास्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं बेसिकली, आप इनको पहन लीजिए ना, अगर आपकी तरफ कोई बुलेट फायर कर देता है तो ये पेनिट्रेट नहीं होने देंगे बुलेट्स आपके शरीर में। हल्का सा सेटबैक लगेगा, शॉक लगेगा, झटका लगेगा, आपको हल्का पेन भी होगा, लेकिन ये मजबूत इतनी होंगी आपकी
बुलेट प्रूफ जैकेट कि इसके बुलेट टकरा कर आपके शरीर में इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। करेक्ट। तो रिसेंटली डीआरडीओ और आईआईटी ने दिल्ली ने मिलकर ये लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स को यहाँ डेवलप किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ईरान के द्वारा पावरफुल सुसाइड ड्रोन को अनवील किया गया शाहिद 136B। हम जानते हैं इजराइल और ईरान अभी दोनों वॉर में हैं, तो यहाँ पे ईरान के द्वारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा गया जहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया शाहिद 136B। ये एक पावरफुल सुसाइड ड्रोन रहेगा। इसी के साथ साथ जिहाद भी एक ये लिक्विड फ्यूल ब्लास्टिंग मिसाइल है, ये भी यहाँ पे लॉन्च की गई। तो दो चीज़ हो गई, जिहाद एंड शाहिद 136B, ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पर। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली जो कम्युनिकेशन है, राइट, ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, इनके ऊपर बात को बढ़ाने के लिए, लोगों को अवेयरनेस कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम ध्यान देंगे, ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग, मॉरल एंड मटीरियल राइट्स फॉर इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। एंड इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इसको पहली बार 1991 में ऑब्जर्व करा गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर्स पर। यूनियन कैबिनेट अप्रूवल्स हम देख चुके हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंप्लीट हुए 3 साल हो गए इसको, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। देन यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 थीमेटिक हब्स एंड टेक्निकल ग्रुप्स अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। देन यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अटेंड किया 40th एडिशन ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेजिंग डे परेड नासिक महाराष्ट्र में। देन MEITY एंड MCTE ने पार्टनर किया ताकि इनोवेशन पे बढ़ावा दे सके, हम कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सके फॉर डिफेंस एप्लीकेशन। इसी के साथ साथ निर्मला सीतारमन मैम, ये जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये उज्बेकिस्तान पे विजिट पे थी। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $162 मिलियन का लोन अप्रूव करा ताकि जो टूरिज्म है हिमाचल प्रदेश में उसको बढ़ावा दिया जा सके एंड वहाँ पे एरियाज को रीडेवलप किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके, उनको ब्यूटिफिकेशन करी जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं CBDT। इन्होंने रिलीज की नई गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग डिलेड टैक्स रिफंड क्लेम्स। सेबी ने इंट्रोड्यूस की नई रेगुलेशंस फॉर इन्वेट्स एंड रीट्स। देन सत्या माइक्रो कैपिटल, इन्होंने सिक्योर किया 100 करोड़ रुपीस का ये लोन, कहाँ से, मिजहू बैंक से, ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस में हेल्प की जा सके। इसी के साथ साथ अमेरिकन बायोलॉजिस्ट विक्टर एम्ब्रॉस एंड गैरी रुवकुन, इन दोनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024। देन DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया 4th जनरेशन ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को, कहाँ पर, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में इन राजस्थान। देन DRDO एंड IIT दिल्ली ने डेवलप की लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स। देन ईरान के द्वारा पावरफुल सुसाइड ड्रोन लॉन्च किया गया शहीद 136B। एंड इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नॉट रिसेंटली हैज बीन ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस। तो इनमें से सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को यहाँ पे स्टेटस नहीं ग्रांट किया गया, बाकी तीनों को यहाँ पे चारों को नवरत्ना स्टेटस ग्रांट किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुआ 28 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड वो पहला NBFC बना जिन्होंने इंप्लीमेंट किया NPCI eKYC सेतु सिस्टम को। तो नहीं, ये जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड वो पहला NBFC नहीं बना है। पहला NBFC कौन सा था, वो था HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सेबी रिवाइज गाइडलाइंस ऑफ एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू ऑफ स्टॉक्स इन कैश मार्केट इन प्रीवियस 6 महीने वो कितनी होनी चाहिए, 35 करोड़ रुपए होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द विनर्स ऑफ 66th एडिशन ऑफ द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो एशिया का ये हाईएस्ट अवार्ड है, राइट। इसी को हम नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। एंड अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो रवि कन्नन वो हैं जिनको सम्मानित नहीं किया, बाकी सभी को यहाँ पे 66th एडिशन ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड फॉर हिज सपोर्ट टू द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। तो इनैमुअल मैक्रोन को यहाँ पे सम्मानित किया गया है ओलंपिक ऑर्डर के साथ इन गोल्ड, ताकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है पेरिस ओलंपिक गेम्स को स्मूथली कराने में एंड उसकी वर्किंग में, इसलिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल्स ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2 September।
यहाँ पे अगर हम बस ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए एंड बी सही है। सी कह रहा है सेटिंग अप अ 4th सेमीकंडक्टर यूनिट अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अहमदाबाद गुजरात में। तो याद रखेंगे ये 4th सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं होगा बल्कि ये 5th सेमीकंडक्टर यूनिट होगा। एंड इवन अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात एक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ सेमीकंडक्टर्स माना जाता है इंडिया में। नेक्स्ट, किस डे को इज एनुअली ऑब्जर्व्ड एज नेशनल टीचर्स डे? तो 5 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज नेशनल टीचर्स डे। एंड ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है। यह इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सेकेंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट, नेम द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक that was recently launched by Ministry of Electronics and Information Technology to provide blockchain as a service with geographically distributed infrastructure। तो इसका नाम है विश्वस्या। विश्वस्या के साथ ही साथ यहाँ पे दो और चीज़ यहाँ पे लॉन्च की गई थी जिनका नाम आ जाता है आपका ये है आपके प्रमाणिक एंड NBF लाइट। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव जो अभी लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह चौहान के द्वारा। तो ये है विजियो नेक्स्ट। जैसे बाहर की कंट्रीज अपने फैशन को फॉरकास्ट करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग फ्रेमवर्क लाती हैं, ऐसे ही हम क्यों ना अपने इंडिया में जो लोकल हमारा डिज़ाइन है, जो लोकल हमारा फैशन सेंस है, उसको हम फोरकास्ट कर सकें, राइट। इसी के लिए ये विजियो नेक्स्ट लॉन्च किया गया जो कि एक AI एनेबल्ड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एनेबल्ड रहेगा। इसमें बहुत सारी हज़ारों में इमेजेस को फेड की गई हैं इंडिया के फैशन की, एंड ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे हम क्या फैशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू बुरनई एंड सिंगापुर? यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है इंडिया और बुरनई के बीच में एक MOU साइन हुआ था इन द ऑपरेशन टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड टेलीकमांड स्टेशन फॉर सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल्स। नेक्स्ट आ जाता है वो चेयरपर्सन कौन है ऑफ 22 मेंबर एडवाइजरी कमेटी जो कि सेबी के द्वारा फॉर्म की गई टू स्ट्रीमलाइन रूल्स एंड लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर। तो वो है रमा सुब्रमण्यम गांधी इस 22 मेंबर एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वाज स्वॉर्न इन एज द 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन सितंबर 2024। तो वो है अतिशी। अतिशी 3rd वीमेन चीफ मिनिस्टर बन गई हैं दिल्ली की। ये बनी और ये 8th चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की। इन्होंने सक्सीड किया 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के, वो थे अरविंद केजरीवाल को। ये दोनों आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, who has been recently elected as the prime minister of श्रीलंका? तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? अनुरा कुमारा दिस्यंके, राइट। ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के, सॉरी ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं कहाँ के? श्रीलंका के। नेक्स्ट आ जाते हैं किन्होंने अभी रिसेंटली सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया जो कि मरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुई इन सिंगापुर। तो किन के द्वारा जीती गई? लैंडो नॉरिस के द्वारा जीती गई। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। एंड ऑस्कर पिएस्ट्री ये 3rd पोजीशन पे आ जाते हैं जो कि मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया यूलिप हैकेथॉन 2.0 को? यूलिप क्या है? यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर में हैकेथॉन कराई गई कि लॉजिस्टिक को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हम डिजिटली सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर ये हैकेथॉन यहाँ पे कराई गई है। पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हैकेथॉन को कैरी आउट कराया? तो वो है NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एस्टेब्लिश किया रेल रक्षक दल को इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जोन टू रिस्पॉन्ड टू ट्रेन एक्सीडेंट्स एंड कंडक्ट रेस्क्यू ऑपरेशंस? तो वो है इंडियन रेलवेज, राइट। इंडियन रेलवेज ने एस्टेब्लिश किया है रेल रक्षक दल को ताकि कोई भी इमरजेंसी के टाइम पर जो भी ये रेल रक्षक दल हैं जिनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा वो इमरजेंसी के टाइम पर वहाँ पर पहुँच सके एंड उस एक्सीडेंट एरिया में हेल्प की जा सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा होमवर्क पार्ट। इसमें आपको 3 करंट अफेयर्स बताने हैं रिलेटेड टू डिफेंस। डिफेंस में आ सकता है कि कोई नए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आया हो किसी इक्विपमेंट का, या फिर हम किसी और कंट्री के लिए किसी डिफेंस के लिए कुछ इक्विपमेंट बना रहे हो, या फिर डिफेंस से बात करें तो हमारा कोई नया इक्विपमेंट इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की हो जिसमें कोई नई टेक्नोलॉजी आई हो, राइट। या फिर कोई नया टैंक आया हो, कोई नई सबमरीन आई हो, कोई नया एयरक्राफ्ट आया हो, या कोई पहली महिला बनी हो जिन्होंने तेजस को फ्लाई करने का मौका मिलेगा, वो कौन है? तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपका होमवर्क रहेगा। सेशन पसंद आया स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। एंड स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स।